Today, we cherish the ones who made our independence possible. Freedom is hard to get, but we are blessed to have it. Let's appreciate everything we have and celebrate the great miracle of freedom. Happy 74th Independence Day to all. Freedom should not be something that you have to deserve. It is something that you naturally have, something that no one can take away from you. Let's celebrate freedom. Happy Independence Day and good morning everyone. बात ये हवाओं को बताए रखना जहाँ रोशन होगा दिए जलाए रखना की है हिफाजत लहू देकर जिसकी हमने उस वतन ए ज़मी को रहती दुनिया तक कायम रखना. Freedom is for everyone. It does not see any shape or color. We had enough of the hate and violence, and now we need to build our new future, full of love and understanding. Let's raise our glasses to Independence Day. The esteemed Director Sir, Chairperson Ma'am, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Academic Head Ma'am, benevolent teachers, all the respected parents and dear school fellows. Today we are celebrating another landmark of success by celebrating 74th Independence Day of our beloved country, India. So on behalf of Inspiration Public School, Kathgodam, I Kuhu Jaiswal along with my friend Gautam Deopa welcome you all from the core of our heart to the celebration. An atmosphere is full of positive energy. This morning we are celebrating the biggest festival of our country, and now our respected Principal Sir is here to say a few words on this special occasion. The very best of mornings to all of you. In the times when the words like isolation and lockdown have become very common, it fills me with hope to wish you all a very happy Independence Day. I sincerely pray to God for the well-being of each one of you and your families, dear students and honorable teachers. It would not be a mistake to compare the current times with India's national struggle for freedom. We feel trapped in shackles of health emergency, which has restricted our expression and freedom. Coronavirus has plagued the world order just like imperialism did in history. India fought with colonial powers on front foot, just like it is leading world today amid the war against pandemic. From Naroji to Gokhale, Tilak to Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu to Aruna Asaf Ali, Ras Bihari Bose to Subhash Chandra Bose, all the luminaries contributed to our shared vision of freedom, embodying the most advanced ideas. Today we don't have these luminaries, but their ideas still serve as towering lighthouses. Gandhi gave the idea of Swachhata and sanitation, and this is exactly the most important weapon against COVID-19. From the Swadeshi movement to Quit India, our leaders organized some of the greatest mass movement in world history, and today we are again participating in mass movement of social distancing. The time and our weapons of resistance against the common enemy may have changed, but the same spirit through and through. My dear students, we have to keep ourselves more informed than ever. Constant vigilance is the key, and my hope lies in you. You have to remind your friends and family and Corona warriors of how much you love them, so that they see hope and love in you all. And to the teachers, I would like to express my immense gratitude for staying strong in these times. As a community, your contribution worldwide these days shall never be forgotten. Thank you so much. On this note, at last, I wish you all a very happy Independence Day. Stay home, but let your thoughts seek independence and freedom. I am grateful for your patient hearing. Thank you. Jai Hind. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा. Poetry is an emotion put into measure. The emotion must come by the nature, but the measure can be acquired by art. So to express the worthy feel of freedom, Nilaksh Bhatt of class 7th A is here with a beautiful poem. Good morning to one and all. Today on this auspicious occasion of Independence Day, I have got this golden opportunity to recite a poem. So here I begin. Some things can't just be expressed in words. My eyes are little wet, seeing the free flying birds. These are the tears of happiness, seeing the birds flying up in the sky. Thanks to the fearless leaders who faced it all, making tough times pass by. There may be many things can't be lived without,
but freedom is what I cherish the most, without any doubt. Love can speak volumes even when the words becomes less. Love for freedom of some has left us blessed with this freedom, these moments we share. Let's learn to care for the people around us, care for our nation in every possible way. Come, let us together wish our beautiful India a very happy Independence Day. Thank you. मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखती हूँ। Now let's get started with today's performance to draw the strings of our heart with a beautiful song by shining stars of inspiration. गोटे गोटे कंठों ने गाया गौरव गान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। एक रही है एक रहेंगे भारत की संतान। एक रही है एक रहेंगे भारत की संतान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। समझाएंगे नादानों को सोया देश जगाएंगे। दुश्मन के नापाक इरादे जड़ से काट मिटाएंगे। समझाएंगे नादानों को सोया देश जगाएंगे। दुश्मन के नापाक इरादे जड़ से काट मिटाएंगे। भारत भाग्य विधाता हम हैं, जन जन की आवाज है। भारत भाग्य विधाता हम हैं, जन जन की आवाज है। एक रहेंगे भारत की संतान। एक रहेंगे भारत की संतान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। ऊंच नीच निज के विवेक ने दुर्बल किया स्वदेश को। बाहर से भीतर से घेरा दिया रे देश को। ऊंच नीच निज के विवेक ने दुर्बल किया स्वदेश को। बाहर से भीतर से घेरा दिया रे देश को। मिटे भेद मिट जाए अंधेरा, जलती हुई मशाल है। मिटे भेद मिट जाए अंधेरा, जलती हुई मशाल है। एक रहेंगे भारत की संतान। एक रहेंगे भारत की संतान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान। एक रहेंगे भारत की संतान।
संतान। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत की संतान। It was a beautiful and mesmerizing performance. We owe a heartfelt gratitude to our freedom fighters who gave their life and made great sacrifices. That is why we all are here to celebrate this nation's day. This day is dedicated to those nation's guardians. Moving forward to our next performance, I welcome Varnika Joshi from class 8th A for Hindi speech. मैं खूब रिझाता तुझे आंगन में ठुमक ठुमक कर, बस तेरा ही बेटा था माँ आंचल में सिमट कर। पर आज पूरे देश का बेटा हुआ हूँ मैं, आया हूँ तेरे द्वार तिरंगे पर लिपट कर। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमें भारत माँ के उन अमर सपूतों का स्मरण हो आता है और हम उनके प्रति नतमस्तक होते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर भारत माँ की रक्षा की। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं। किंतु कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे हमारे पूर्वजों ने फिरंगियों के क्रूर यातनाओं को सहन किया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाना कितना मुश्किल था। इसमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों का बलिदान और 1857 से 1947 तक के दशकों का संघर्ष था। आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सुख शांति की धरती दी है, किंतु हमें कभी भी अपने आप को देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होने देना है और एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते हमें अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, प्राण क्या है देश के हित के लिए, प्राण क्या है देश के हित के लिए, देश खोकर जो जिए तो क्या जिए। धन्यवाद। Dance for laughter, we dance for tears. We dance for madness, we dance for fear. We dance for hope, we dance for screams. We are the dancers, we create the dreams. Yes, it is the time to welcome the brilliant dancers of inspiration. Let us cheer up for the beautiful dance performance by the student of class 7th. गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भर। फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून गए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म
That was indeed a lovely performance. How captivating, how solacing. My heart is still brimming with patriotism. We all are so different, but there is one thing that unites us, and it's independence. We should honor it and never forget how hard it was to get. Now, with the feel of integrity and unitedness, Anushka Pandey is here with an English speech. I proudly live in a country which is full of diversity. I proudly live in a country where together we solve every adversity. I am Anushka Pandey of class 8th, wishing you a very happy Independence Day. Whenever we hear 15th of August, we have nerves all over and a thought of boundness, a thought of sacrifice and a thought of freedom. Independence Day marks the end of British rule. The Britishers, who came just as a trading company, who once saw the amazement of India, thought not to just have a relation of trade, but to own it. But when one has wings, they can never be locked in a cage. And hence the wings of India came out, our freedom fighters, who fought for their nation without thinking of their lives. They never fought for taking a revenge of the cruelty done on them by the Britishers. Rather, they fought for the success and freedom of their nation. Saying this, I remember a few lines. न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न नाम मेरा है. मुझे तो केवल इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है. Time is the greatest power of all, and hence changes constantly. Thus, changed and came the pandemic COVID-19. But thanks to our nation heroes, our policemen, the doctors, the armies, the shopkeepers, and all the other people out there who are still fighting for their nation and working for the welfare of ours. At last, I want to sum up my words by saying that the next time when you celebrate Independence Day on the independent India again, remember it's not just holding a flag in your hand and raising it high in the sky. It is the deepest thought from your heart for all these freedom fighters, the nation heroes, and all the other people who are working in this dangerous time. Salute them from the deepest of your heart. Jai Hind, Jai Bharat. Independence Day celebration is undoubtedly incomplete without national anthem. So let's sing our national anthem with the same feeling of pride, freedom and love. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा. उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे. तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय